हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में कि ट्रायंगल का एरिया आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला भी अलग अलग होता है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम आपको बाकी फार्मूलाज एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उनका फार्मूला वो क्यों है। सो लेट्स बिगिन विद द राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग साइज की हैं। सो इट इज़ अ स्केलिन राइट ट्रायंगल। इसका एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और यू कैन से हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर की जगह कई लोग एल्टीट्यूड वर्ड भी यूज़ करते हैं। बेसिकली बोथ आर सेम, स्पेशली इन द केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो अब हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला बना क्यों है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। सो इन दिस राइट ट्रायंगल, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, और यू कैन से एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। सो हियर परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल. So the area formula is half into base into altitude. But how do we get this formula? I will tell you that. तो इसमें आप अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस राइट ट्रायंगल. नाउ वी हैव गॉट two right triangles of exactly same size. Now I will rotate this right one. मैं इसे घुमाऊंगा और तो इस राइट ट्रायंगल को घुमा के हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और अब इस राइट ट्रायंगल को हम इस राइट ट्रायंगल के साथ मिलाएंगे, और आप देखेंगे कि ये राइट ट्रायंगल जब इस राइट ट्रायंगल के ऊपर आता है तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होके एक रेक्टेंगल बना देता है. नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ रेक्टेंगल. सो एक रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा. दैट इज इट्स लेंथ इनटू विड्थ. हियर इट इज द लेंथ एंड इट इज द विड्थ. सो इफ वी मल्टीप्लाई द लेंथ which is the base of this triangle, length means base, so base multiply altitude will be the area of this whole rectangle. But there are two similar sized triangles inside this rectangle. So it means if we divide the total area of this rectangle by 2, or you can say if we multiply the total area by 1 by 2, then it will be the area of one triangle. So it means that the area of any one of these triangles will be half into base into altitude. So this is how we get the formula for area of a right triangle. I hope you got that. आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अब हम चलते हैं किसी भी एक नॉर्मल ट्राइंगल के एरिया को निकालने के बारे में. नॉर्मल ट्राइंगल इट कैन बी एनीथिंग, आइसोस्केल्स, स्केलिन, राइट एंगल, एक्ट्यूड, ऑब्ट्यूज, एनी ट्राइंगल. हियर अगेन द फॉर्मूला टू गेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब आप कहेंगे कि इसमें हाफ तो आपको पता है, बेस भी आपको पता है. इस ट्राइंगल का बेस इज दिस लाइन, बट व्हाट विल बी द हाइट? Here the height will be, I will draw a line so that you can understand it. Here I will draw a line from this point to the base. So here you can see this line, it is the height of this triangle. So if you multiply the size of the base with the height of this triangle and then multiply it with 1 by 2, then you will get the area of this triangle. But I will show you how we got this formula. We will derive this formula. So in this figure now there are two right triangles. If you अगर आप से ध्यान से देखें तो इसमें दो राइट ट्राइंगल बन चुके हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, एंड it is the perpendicular of both of these
ट्राइंगल्स। तो अब आता है हमारा डेरिवेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में हमने दो ट्राइंगल बना लिए हैं, इसको बीचों बीच इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करके। सो दीज आर नाउ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। वी विल नेम देम। The basic triangle was ABC, and now the point on this base, let's name it D. So we have drawn a perpendicular named AD, that is the height of this triangle. Okay, so now we have got two triangles. One is ABD and the second is ACD. Now the common side of these triangles is AD, which is perpendicular in both of these triangles. Okay, so let's assume that the size of BD is X. So the size of DC will be BC minus X. I hope you got that. Okay, so what will be the area of ABD? So the area of triangle ABD will be equal to, it is a right triangle, so it will be equal to half into base, which is X, into AD. AD is the perpendicular, or you can say altitude. So it means it is X into AD upon 2. On the other side, the area of triangle ACD, it is half into base is BC minus X into altitude, it is again AD. So here we got BC minus X into AD upon 2. So the total area of both of these triangles, it means the area of triangle ABC will be equal to area of ABD and ACD. ABD and ACD. So let's put the formulas here. So area of triangle ABD was X into AD upon 2, then plus area of triangle ACD, it is BC minus X into AD upon 2. Here AD upon 2 is the common thing, so we will take it out. So inside we get X inside we get X plus BC minus X. So it means we get AD upon 2 into X is gone with X, so we got just BC. So it means the total area is half into AD into BC. So it means half into the base of the triangle, that is BC, and AD, the height of this triangle, height, or you can say altitude. So here we got this formula, area of the triangle is half into base into height. This is the derivation of the area of any triangle. You can easily derivate this formula using this calculation. So this is how we can calculate the area of a triangle. Now there is one more formula that is called Heron's formula. Heron was a mathematician on which it is named. This formula applies for every type of triangle, especially if it is a scalene triangle where all the three sides are of different sizes, but you can use it on any type of triangle. So here the first thing you have to calculate is S.
here S is the semi-perimeter. Semi-perimeter means half of the perimeter. How will you get that? How you will get that? You will get that by adding all the sides of the triangle and then divided by 2. So S is equal to A plus B plus C divided by 2. Now the area of this triangle will be under root of S into S minus A into S minus B into S minus C. So this is the basic formula. If you know all the three sides, you don't know the height, then you can use this formula to easily calculate the area of any triangle. In our next video, I will tell you how we can derivate this Heron's formula. So we'll meet in our next video. Thank you very much.